Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के आज के अंक में आपका स्वागत है। हम हमेशा की तरह देश की अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से संबंधित दुनिया भर की ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए हम सबसे पहले आमंत्रित करें आज के हमारे विशेषज्ञ, आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन जी को। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic markets remain closed on account of Dussehra holiday. Sensex and Nifty post the biggest weekly gain in over a month. Other global markets in Asia, US and Europe rise on positive corporate earnings results, and Brent crude oil prices hover around 3-year high level of $85 per barrel. दशहरा के उपलक्ष्य में घरेलू बाजार आज रहे बंद। सेंसेक्स और निफ्टी ने साप्ताहिक आधार पर पिछले एक महीने से अधिक की अवधि के दौरान इस बार सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। कंपनियों की आमदनी संबंधी बेहतर रिपोर्ट से अमेरिका, यूरोप और एशिया सहित दुनिया के प्रमुख बाजारों में दिखी तेजी, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 3 वर्षों के उच्चतम स्तर $85 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। In our top story, domestic equity and currency markets were shut today on account of Dussehra holiday. For the week, Sensex and Nifty posted their biggest weekly gains in more than a month, closing above the 61,000 mark for the first time. Sensex at the Bombay Stock Exchange rallied 1,247 points or 2.1% during the holiday curtailed week to end at a fresh all-time high of 61,306 points yesterday. Nifty at the National Stock Exchange jumped 443 points or 2.5% during the week to also close to a new high of 18,339. In the past 6 trading sessions, the Sensex has added 2,116 points or 3.6%, and Nifty has gathered more than 692 points or 3.9%. At the foreign exchange market, the rupee depreciated by 29 paise against the US dollar to close at $75 and 75 rupees and 26 paise against the US dollar yesterday. पुनीत, दिवाली से काफी पहले बाजार ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए और ये सप्ताह एक कारोबारी सत्र के अभाव में भी खासी तेजी के साथ काफी ऊंचे लाभ के साथ कह लें कि बंद हुआ है। किन अर्थों में ले रहे इस पूरे सप्ताह के कारोबार को, और ये जो तेजी आई इसके पीछे मुख्य कारक क्या रहे? तो मनोज जी, आपने सही कहा कि बाजार में दिवाली से पहले ही काफी फायर क्रैकर्स और पटाखे चल रहे हैं और बाजार बहुत अच्छा चल रहा है। और पिछले, जैसे अर्जुन ने पढ़ा अपने रिपोर्ट में, कि पिछले एक सप्ताह में 700 पॉइंट निफ्टी और 2000 से ज्यादा पॉइंट्स सेंसेक्स में बढ़त आई है। और उससे ज्यादा जो कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं और जिसमें काफी पब्लिक के पास शेयर्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स हैं, वाइडली हेल्ड शेयर्स हैं, उनमें बहुत बड़ी तेजी आई। कई शेयर्स में 30% की तेजी आई है। तो अभी तो एक फेस्टिव त्योहार का सा माहौल है मार्केट्स में। और यदि मैं जब ग्लोबल मार्केट की तरफ देखता हूँ, यूएस मार्केट या दूसरे मार्केट, वहां भी एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है और काफी तेजी का माहौल है वहां पर। तो मुझे लगता है ये पार्टी अभी और चलेगी हमारे बाजारों में। इसका मुख्य कारण तो ये रहा है कि जो पोस्ट पेंडेमिक, जैसे जैसे पेंडेमिक से विश्व उभरा है, तो इकोनॉमिक रिकवरी बहुत अच्छी रही है। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इन्फ्लेशन का चैलेंज है, एनर्जी शॉर्टेज की आशंका है लोगों को, कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक जो रिबाउंड है वो बहुत स्ट्रांग है, पर्टिकुलरली भारत जैसे देश में। और उससे भी मार्केट को बहुत गति मिली है। साथ में जो लिक्विडिटी है, अभी जो निवेशक हैं, नए निवेशक हैं, वो बहुत आ रहे हैं बाजार में। उनको उम्मीद है कि अभी बाजार में वो पैसा लगा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, और इस वजह से भी बाजार में काफी नया पैसा भी आ रहा है और तेजी भी है। Puneet, you spoke about the retail participation. We have some data with us, and that states that the monthly flow from the systemic investment plans has always been 7,000 crore rupees since May 2018, and in September this year, 2021, it has now crossed 10,000
crore rupees for the first time. Now, when you talk about SIP, we're talking about the schemes that is launched by mutual funds. So, are we talking about investors, retail participation, where they are investing by themselves through trading terminals, through brokerage firms, or are we talking about mutual funds also? What is the categorization of this retail participation, which has gone up by so much? Shardan, you're right. In fact, the retail participation has gone up in both categories. We have seen more fund inflows for mutual funds, and also we have seen the retail participation go up directly in the stock markets. And therefore, online brokerages, the ones that which are very popular now, all those are getting new clients and new business every day, and volumes of the market have gone up a lot. But interestingly, the mutual fund industry has also attracted a lot of new money. And SIPs that you mentioned, and usually when you invest, when you start a SIP, you tend to kind of continue with it for many years. The whole idea is that you do not stop investing when the markets go down. So this money will probably continue to come into the markets, and it is already crossed 10,000 crore, which is a milestone for Indian mutual funds, the SIP money. And but I think it is both ways. It is retail investors directly investing in stocks. Mostly they invest in mid caps and small cap stocks, and also investing through mutual funds. I think both of these activities are right now at a very high level. पुनीत जी, यहाँ पर हम आम श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे एक बार फिर से। हमारे साथ कई बार नए श्रोता जुड़ जाते हैं, उसके अलावा बाजार जिस ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है वहां पर आकर बाजार के प्रति कुछ नए लोगों का रुझान हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। ये 7,000 करोड़ से 10,000 करोड़ SIP का आंकड़ा बढ़ गया है। तो ये SIP क्या होती है और इससे किस तरह लोगों को वास्तविक रूप से लाभ पहुंच रहा है, जिसके चलते वो बाजार में नियमित रूप से निवेश कर पा रहे हैं? इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान शब्दों में नए श्रोता के लिए बता दें। बिल्कुल मनोज जी, तो SIP को यदि विस्तार करें तो उसका है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप एक सिस्टम से पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। कोई भी म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्कीम हो, कोई SIP स्कीम नहीं होती, आप किसी भी स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आप रेगुलरली यानी सिस्टम से उसमें पैसा लगाएं। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं हर महीने उस स्कीम में 10,000 रुपये महीना लगाऊंगा, तो हर महीने की 1 तारीख को या 2 तारीख को आप एक सिस्टम बनाते हैं, रेगुलर आप 10,000 रुपया उस स्कीम में पैसा निवेश करते हैं। और उसका फायदा ये रहता है, यूजुअली जो SIP यानी स्कीम आप रखते हैं उसके अंदर आपको 3 से 5 वर्ष तक लगातार पैसा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि बाजार में गिरावट आती है तो आप वो पैसा लगाना बंद कर दें। आपको पैसा लगाते रहना चाहिए, तभी उसका जो रियल फायदा है स्कीम का आपको मिलता रहेगा। और उसका इनफैक्ट लॉजिक भी ये है कि यदि आप रेगुलरली पैसा लगाते हैं तो जब मार्केट्स में कभी करेक्शन भी आती है तब भी आपका पैसा लगेगा और नीचे यानी सस्ते दामों पर आप शेयर्स खरीद पाएंगे। तो आपको बाजारों की तेजी मंदी को नजरअंदाज करते हुए लगातार रेगुलरली पैसा लगाना चाहिए। वो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का बेसिक कॉन्सेप्ट है। Puneet, we have some more data and that states that the BSE Sensex has rallied more than 50% since the last Dasera, which was on October 25, 2020, last year. And it's gone up by 50%. That's what the data is stating. And if you look at the company names and the percentage changes, you'll find that the Tata group of companies are dominating this landscape. Then you have public sector corporations, which includes public sector banks and metals and mining stocks as well, including other public sector companies. Now, what is the reason? What has happened in this 1 year which has led to such high valuations? Where is the price to earnings ratio to back it? What is the fundamental, the technical information which is driving the rise in valuation by as much as 637% increase in the value of a specific share in this portfolio? So, Arjun, markets have risen very sharply. In fact, you mentioned Tata Group companies, and it's a very respected group of India, and their stocks have done exceedingly well. In fact, many stocks have gone up by 7, 8 times, even 10 times during this period. Some of the smaller stocks in this group, and because of 2 reasons. One is that these companies are very strong companies in terms of parentage, and they do fundamental economy related activities. And secondly, I think
the growth prospects of these companies have improved dramatically in the last 6 months to 1 year. So investors have been investing money in companies where they believe that these companies will stay in business. They will not be shaken away by things like pandemic and shutdowns and lockdowns. So companies which are very strong, which have strong base, those companies have attracted more investors, first of all. Secondly, these companies also have shown a tremendous growth. For example, like you mentioned, if you look at last 1 year when Sensex has gone up by 50%, most of the heavy lifting has been done by metal companies. Metal companies have shown big gains. Public sector banks have shown very big gains. In fact, until recently, they were not doing that well, but lately they have started doing very well. And when we look at these companies, right now the market is ignoring the PE multiple. The reason is that they believe that earnings of last year are not comparable because that was an exceptional year. So you can't look at price earning multiple benchmarking the earnings to last year's earnings. And last year's earnings will grow in the current year. So market is looking forward to the current year's earnings coming in very good. And then probably by next year, we will have some kind of a benchmark on price earning multiple. Right now, PE multiples are very high statistically. But I think market is ignoring that because of the fact that last year was an exceptional year when earnings were very, very low. Puneet, I have some more statistical data also for you. And we were discussing about large caps, Sensex and Nifty, top 30 stocks, the top 50 stocks which make up the two indices. If you look at mid cap and small cap, mid cap has gone up by 78% and small cap has gone up by 97%. So what's the sentiment driving that? So typically, whenever there's a bull market, we find that small caps and mid caps will outperform large caps. The reason is simple. The reason is that in the small caps and mid caps, whenever the economy is down or markets are down, there is very little investment interest. People don't want to invest in those stocks. They want safety in large caps, which are liquid. But whenever there's a bull market, small investors and retail investors at large, they want to invest in smaller companies also. And when they want to invest in smaller companies, there is less supply of these companies. The stock is not easily available and it tends to shoot up because there's no seller at those levels. So this is a pattern we have observed over many, many decades. So it's not a surprise. Interesting thing is that many of these small caps and mid cap companies, they tend to grow over the years if they become if they have good corporate governance issues, standards and all, then these companies grow. But typically we find that small caps and mid caps grow. If you look at the last 1 year, then mid caps the index has gone up by about 96%, like you said. Many mid cap stocks have actually gone up by more than that, far more than that. And the large caps, relatively speaking, have underperformed. So they would not double in a year, but typically large cap stocks, we define large caps by companies which are the first top 100 companies of the country. And those large caps have also given 40-50% return in the last 1 year. So it's been a party for all stocks, but definitely smaller stocks have gained more. पुनीत जी, यहाँ पर हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जो स्थितियां उभर के आ रही हैं उसमें कौन से क्षेत्र ऐसे निकल के सामने दिख रहे हैं जिनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा और जहां जोखिम जो हमारे छोटे निवेशक हैं उनका कम रहेगा और मुनाफा अपेक्षाकृत दूसरे क्षेत्र की तुलना में बेहतर रहेगा, उन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए जिसमें कि कोविड से लेके आशंकाएं अब काफी घट गई हैं? मनोज जी, ये काफी देखिए कठिन सवाल है क्योंकि बाजार का फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है शॉर्ट टर्म में पर्टिकुलरली। हम लॉन्गर टर्म में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ किस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन शॉर्टर टर्म में हमेशा मुश्किल रहता है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये देखते हुए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी 9.5% ग्रो करने की उम्मीद है इस वर्ष और अगले आने वाले 2-3 वर्षों में भी शायद हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेंगे। तो मुझे लगता है इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज जो हैं, पर्टिकुलरली मैं कहूंगा बैंकिंग क्षेत्र, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो वैल्यूएशन है बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही, तो मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं अभी भी, क्योंकि वो बहुत बड़े नहीं है, बाकी बैंकों में काफी तेजी आई थी, तो वहां पर हम तेजी की उम्मीद करते हैं। इकोनॉमी रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स हैं, रियल्टी सेक्टर स्टॉक्स में 10 वर्ष के बाद हम सबसे बड़ी एक बढ़त देख रहे हैं। मुझे लगता है रियल्टी सेक्टर में भी काफी स्कोप है बढ़ने का, और उसके साथ साथ आईटी सेक्टर जो डिफेंसिव है, फार्मास्यूटिकल्स डेफिनेटली, पर वो डिफेंसिव स्टॉक है, मुझे लगता है कि वहां पर बढ़त मिलेगी,
लेकिन वहां पर क्योंकि काफी हम ऑलरेडी मुनाफा देख चुके हैं, तो मुझे लगता है वहां पर अब एक नॉर्मल रिटर्न रहेगी, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। Puneet, just looking at the growth of large cap, mid cap and small cap companies, is this realized growth or is it growth yet to be realized? We have the Make in India campaign of the government. Now we also have the international China Plus strategy. But has any of this business actually come in? And are we looking at manufacturing which has picked up or will pick up, or services industry still dominating the landscape in terms of the earnings of these companies? So Arjun, right now if you look at the GDP mix, then services are dominating because they're about 60% plus of the GDP print. So, but of course the government has been trying to push manufacturing sector to greater heights simply because manufacturing sector provides very high quality jobs to people, and it generates a lot of employment in the primary sector and the tertiary sector. So, and India has been kind of weak in manufacturing sector because of various historical reasons. Fortunately, we have a window of opportunity now. There is a possibility that the world might come to India for manufacturing in a China plus one policy. And government, interestingly, has put in place very attractive schemes to attract manufacturing companies in India. Primarily among that is the production linked incentive scheme, the PLI scheme, which is motivating companies to manufacture electronics, automobiles, textiles, a whole host of goods in India. But as you said, much of this investment is yet to be realized in India. We are hoping that investors will come to India, and the government has been trying to make efforts to attract investments. But I think much of this will really materialize in the next 3 to 5 years, because you can't put up factories in a few months. Factories take 3 to 5 years to be set up and to start manufacturing. But I think we will get there. I think if you ask me, the share of manufacturing in GDP for India will rise in the next 4 to 5 years, and I think that is what market is telling us. The International Monetary Fund has revised its growth forecast for India to 9.5% for the financial year 2022, while dropping its growth estimate globally by 10 basis points to 5.9%. Why is that the case? Is that because of rise in manufacturing or services picking up, and you have the labor force available through vaccination drives? So post the second wave of pandemic, IMF and everybody thought that the economy will slow down significantly across the world. And that has happened also in many pockets, particularly China. In fact, if you look at the Chinese GDP print, we are expecting a significant decline in Chinese growth rates for, again, a variety of reasons. But India, fortunately, has been able to keep the pace going as far as economic growth is concerned. And the IMF report that you're talking about, it goes on to say that India will be the fastest growing economy among large economies in the world. So if you look at the top 20, 25, 30 economies of the world, then India will be the fastest growing economy next year and probably for next 2-3 years. So I think that is a great achievement. It shows that the resilience that India has shown in terms of fighting off pandemic and coming out of it, I think that is commendable, and it is also being recognized by agencies like IMF. आइए चलें खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज तेजी दिखी है। अमेरिका में कंपनियों की बेहतर आय संबंधी खबरों का एशियाई बाजारों पर आज अनुकूल असर पड़ा। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.8% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.9% की वृद्धि हुई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.4% तेजी आई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% लाभ में रहा। उधर हांगकांग के हिंगसेंग में 1.5% की वृद्धि हुई। यूरोपीय क्षेत्र की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी तेजी का सिलसिला चल रहा था और प्रमुख सूचकांक लगभग 7 महीने के सबसे बेहतर साप्ताहिक प्रदर्शन की ओर आगे जाते दिख रहे थे। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.3% बढ़त के साथ चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 0.5% की तेजी थी और जर्मनी का डेक्स 0.3% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। Puneet, we are seeing both the Asian and the European markets pick up, especially after
US companies have declared their corporate results. So why is that the case? And do give us your comments about the market capitalization of companies listed on our stock exchange, which is now being compared to London's FTSE. So two things. One is what happened in America yesterday and last couple of days is very interesting. There were apprehensions about American economic growth and corporate earnings. So two things happened. One, the unemployment data which came yesterday showed that employment has picked up very well in America. The unemployment number, the new filings were less than 3 lakhs, which is the lowest number after the start of pandemic. So it shows that the US economy is coming back to the pre-pandemic levels. Number one. Number two, the inflation, which is a cause of concern for everybody, that inflation print was also lower than expected. So these two concerns were taken care of. And at the same time, the American banks, in fact, the financial sector had not been doing so well. The American banks, 4-5 big banks came out with numbers, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America, Citibank. These 4 banks came out with numbers, profits, which are much ahead of the street expectation. And as a result, the bank stocks went up. And today, in fact, today evening, Goldman Sachs will be reporting numbers. Again, the market is betting that those numbers will be much better. And therefore, banking sector stocks in America have taken off very well. And following that, we could see that in Asian markets and the European markets, all the financial sector stocks were up. So in a sense, this is a vote of confidence in the performance of the company, of the financial sector and the economy. And I think that is why the markets have taken off. Well, let's see what the U.S. market actually did yesterday. The Dow Jones Industrial Average rose 535 points, or 1.6% to 34,913. The S&P 500 gained 74 points, or 1.7% to 4,438. And the Nasdaq Composite Index added 252 points, or 1.7% to 14,823. While the S&P 500 registered its biggest daily percentage gain since March 5th, the Nasdaq notched its biggest since May 20th, and the Dow its biggest since July 20th. The tech sector jumped 2.3%, giving the S&P 500 its biggest boost, with shares of Microsoft and Apple rising. Shares of Citigroup, Bank of America and Morgan Stanley also gained after they topped the quarterly earnings estimates. Also, United Health Group climbed 4.2% after the health insurer reported results and raised its profit forecast. Adding to optimism, the data showed the number of Americans filing new unemployment benefits claims fell close to a 19-month low, and a separate report showed producer prices eased in September. Data from recent inflation reports also suggested COVID-driven price rise may have peaked. Once again, Puneet, you're vindicated by what's happening as far as the U.S. economy and the stock market is concerned. Is this also because of the policy or the course of action by President Joe Biden? Has he been good for the economy, even though the first 100 days has not fared well for him on the indicator front? So the President Biden, I think, faced a lot of problems initially in his presidency because of some hurdles from within the Congress in US, and of course the unraveling of the pandemic story. But I think he's got his priorities right. He's pushing more infrastructure spending in America. He's giving more financial support to those who are affected, and I think that has helped U.S. economy to come out of the depression caused by a pandemic much faster than expected. So of course inflation coming down is also positive. So right now I think the indicators are that the U.S. economy, which is the world's largest economy, almost $19 trillion, which is 25% of the global economy, they seem to be doing well. पुनीत जी, यहाँ पर हम समझना चाहेंगे आम श्रोताओं के नजरिए से, दुनिया भर के शेयर बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। भारत हो या कह लें एशिया हो या यूरोप हो या अमेरिका हो, हर जगह पर कुल मिला के शेयर बाजार काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ अहम सवाल ये है कि क्या अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक तेजी है वहां भी यह प्रदर्शन दिख रहा, या जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं बड़ी, वहीं तक यह तेजी सीमित है? देखिए मनोज जी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली इकोनॉमी जो है वर्ल्ड वाइड वो ग्रो कर रही है और अच्छी गति से चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में या 1 वर्ष में जो हम पेंडेमिक के जो भी स्कार्स थे, जो भी नुकसान थे, वो उसको शायद भरपाई कर पाएंगे और इकोनॉमी जो है वो पुराने अपने गति पर आ जाएगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। एक स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट का एक कंपोनेंट भी रहता है और मुझे लगता है कि मार्केट कई बार थोड़ा ज्यादा
ऑप्टिमिस्टिक हो जाती हैं या ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो निवेशकों को कॉशियस रहना चाहिए। देखिए, दे शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। कई बार लगता है कि आसान तरीका है पैसा बनाने का, यहाँ पर जल्दी हम पैसा बना सकते हैं। मैं अपने 25-30 वर्षों के अनुभव से ये कह सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही धैर्य से पैसा बनाने और निवेश करके धीरे धीरे चलने वाला बाजार है। यदि यहाँ जल्दबाजी करेंगे और ज्यादा पैसा जल्दी कमाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो मैं, हालांकि इकोनॉमी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ग्रो कर रही है, लेकिन बाजारों को लेकर मैं थोड़ा सा चिंतित रहता हूं, क्योंकि निवेशक अगर उसको गलत ढंग से इन्वेस्ट करेंगे, लालच ज्यादा करेंगे उसके अंदर, तो नुकसान होने की बहुत आशंका यहाँ रहती है। तो इसलिए दोनों चीजें थोड़ी अलग अलग हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ से हम सीधा सीधा आने वाले समय में स्टॉक मार्केट को रिलेट न करें। स्टॉक मार्केट्स पहले ही बहुत बढ़ चुकी हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ द इकोनॉमी डूइंग वेल। Well, let's have a look at the oil market. Brent crude oil futures touched the highest since October 2018, rising 92 cents to $84.92 a barrel. Front month prices are set to climb for the sixth straight week, up 3% this week. U.S. crude futures rose 75 cents to $82.06 a barrel, adding to an 87% jump on Thursday. The contract is heading for a 3.4% gain on the week, up for the 8th consecutive week. Puneet, prices are now touching $85 per barrel. The next supply cut would be discussed in January. Right now, there is a supply gap of 700,000 barrels per day. How do you see prices now reaching an all-time high? So, Arjun, I think oil prices are definitely heading much higher because of shortage of coal and gas in Europe and China. A lot of demand has shifted to crude oil. So, while crude oil prices are already going higher because of production cuts, now we have increased demand during winters. Which may push the prices even higher. So my own take is, given the situation right now, prices could go even higher, and I don't see a very major fall in these prices, at least for next 3 to 6 months. And only after maybe January, February next year, we could see some softening of oil prices. पुरी जी, पिछले सप्ताह तक ऊर्जा संकट को लेकर बड़ी चिंताएं जताई जा रही थी और इसके गहराने के आसार दिख रहे थे। अब क्या स्थिति है? स्थितियां अनुकूल होती नजर आ रही या अब भी चिंताएं बनी हुई हैं? मनोज जी, देखिए, कुछ चिंताएं तो हैं, क्योंकि ये बात सही है कि उतनी इजी पोजीशन नहीं है कोल की, और जो एनर्जी क्राइसिस या शॉर्टेज की कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन मैं उसको क्राइसिस की संज्ञा नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्राइसिस है और घरों में लाइट नहीं आएगी और प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। डेफिनेटली 20-25% शायद कुछ हमें स्ट्रेस होगा या कटौती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि क्राइसिस तो नहीं है, शॉर्टेज डेफिनेटली है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार विजयादशमी के उपलक्ष्य में आज बंद रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के मूल्यों में नरमी देखने को मिली है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में तेजी आने और प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की कमजोरी से सोना थोड़ा सस्ता हुआ। सोने का मूल्य 0.8% घटा $1,780.80 प्रति औंस पर आ गया। डॉलर इंडेक्स कमजोर पड़ने से ये नरमी आई। उधर चांदी का मूल्य भी 1.3% घटकर $23.23 प्रति औंस के स्तर पर आ गया। लेकिन इसके बावजूद सोना और चांदी दोनों साप्ताहिक आधार पर सबसे तेज बढ़त में रहे। पुनीत जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज जी। And before we close, a reminder of the headlines. The domestic markets remain closed on account of Dussehra holiday. Sensex and Nifty post the biggest weekly gains in over a month. Other global markets in Asia, US and Europe rise on positive corporate earnings results. And Brent crude oil prices hover around 3-year high levels of $85 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.